Hi guys, big subject today. What is the ideal behavior on a work trip? कुछ jobs में work trips normal होती हैं. Sometimes these trips can be boring too, but they manage to take us to interesting places. Here are a few things to keep in mind. सबसे पहले packing. आप वर्क ट्रिप के लिए दिल्ली जाओ या गोवा, आपका ड्रेसिंग हैज टू बी बिजनेसी. यू कैन नॉट पैक लाइक यू आर गोइंग फॉर अ हॉलिडे. आप ऑफिस में जो कपड़े पहन के जाते हैं आपको यहाँ पे भी वैसे ही रहना है, ऑलमोस्ट वैसे, स्पेशली काम के वक्त, राइट? इट्स अ वर्क ट्रिप. ड्रेसिंग, depending on your nature of work, if you have to wear suits या blazers or formal shirts, you have to do it. You cannot skip it just because you're not in your office. Think of better alternatives, maybe better fabrics that suits the weather, जितनी ठंडी है या गर्मी है उस हिसाब से. But make sure that you're dressed to work, not to lounge around. आप अगर कुछ specific meetings attend करने जा रहे हैं, so that's different. So you can wear the blazer only for the meeting and then change into your business casuals. You know, stuff that you wear on Fridays, yeah, Saturdays to office. Then, very important, be on time. Another thing to remember is that you are on a schedule. आप भूल नहीं सकते that it's a work trip. You have to adhere to the strict schedule and be on time for every meeting. आप अगर थोड़े भी ensure हो commute के बारे में तो start a little early. Lekin giving excuses like how you got lost in a new place will show badly on you. Behavior. If you have gone with other people, make sure you don't make them uncomfortable with your behavior. And more importantly, if you are traveling with opposite genders, please, chance मारने के बारे में मत सोचिए. It can really boomerang. Formality. आप ऑफिस से बाहर हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो काम का ही है, राइट? फॉर्मेलिटी का लेवल थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन केयरफुली असेस करें. यू कैन क्रैक अ फ्यू जोक्स, बी जॉली, लेकिन आपकी बातें, बिहेवियर्स एक्सेट्रा विल बी डिस्कस्ड बिहाइंड योर बैक टू एंड विल ट्रैवल टू पीपल. Things can really hurt your growth prospects if you touch upon a sensitive office subject or bitch about people. होटल स्टे. कई बार लोग होटल्स में स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं, जैसे कि नाइटी में ब्रेकफास्ट करने आ जाना. भले कितनी भी अच्छी आपकी नाइटी हो या नाइट सूट हो, नाइट वेयर इज अ नाइट वेयर. एंड दे रादर बिंज ड्रिंकिंग. अगेन रिमेंबर, इट्स अ वर्क ट्रिप. कल का दिन भी है एंड यू हैव टू बी योर बेस्ट एट योर वर्क. And finally, table manners. This is a whole new topic and we'll be covering this soon. But basic table manners are very, very important and where you are on your work trip. Regardless of whether you're alone or with a client or a colleague, आप एक company को represent कर रहे हैं. So your behavior is not going to be judged by who you are, is going to be judged by आप किस company से हैं. So and so company वाले आए थे और उन्होंने बहुत खराब behave किया. This is what the impression will be. Or just because the food is sponsored and you don't have to spend it from your pocket, please don't be greedy and hog extra food. No. Remember, always in limits. Your behavior is observed by people around. Till then, see ya.